एथिकलिटी को जज करने की कोशिश की हुई. So that is the outcome bias. Now if you look at another question which was similar to this, आपको याद है third question क्या था? Does anyone recall? We had 3 questions. The third question क्या था? We'll talk about that. Sorry? Oh, sorry? Audit findings, yes. उसमें क्या हुआ था? उसमें ये हुआ था कि 5 उसके पास ऑलरेडी ब्रीचेस की इंफॉर्मेशन थी कि 5 इंस्टेंसेस हो चुके हैं और उससे कहा गया था कि जी आप 5 और कर लें. ये उसको उसके सुपरवाइजर ने कहा. Now half of you got the situation where he made up 5 and it was accepted and it was a success. But half of you got the situation that he made up 5 but those 5 were found out and it was an embarrassment. Again, आप लोगों ने आउटकम की बेसिस पे एज अ ग्रुप डिसाइड किया कि जिस केस में उसका आउटकम एम्बैरसमेंट में निकला है तो वो अनएथिकल था, लेकिन अगर उसका आउटकम ये निकला है कि जी सक्सेसफुल हो गया तो वो उतना अनएथिकल नहीं था जितना द अदर वन. एंड दिस वाज प्रूव्ड एंड दिस हैज़ बीन प्रूव्ड विद मल्टीपल ऑडियंसेस दैट वी वर्कड विद बिफोर. सो दैट गोज टू शो व्हाट हैपेंस. वी समटाइम्स फॉरगेट कि एथिकल सिचुएशंस में, dilemmas में, actual what is the element that we need to look at and need to cover up. You want to conclude? The way we define problem, it's just last 3 minutes and we'll conclude this session. The way we define problem will eventually result in how we address that problem. We define a problem that people are not conscious. We make them conscious. We do trainings. Of course, who doesn't know bribery is bad? Who doesn't know taking gifts from customers is bad? Giving gifts to vendors is bad? Who doesn't know that? But why do we all do it? We try to address those people by gift policy. हम गिफ्ट पॉलिसी इशू कर देते हैं, उसके बाद उसके ऊपर ट्रेनिंग कराते हैं. हम वेंडर की इनसाइडर ट्रेडिंग की पॉलिसी इशू करते हैं, उसके ऊपर ट्रेनिंग कराते हैं. हम बहुत सारी डिफरेंट पॉलिसीज इशू कराते हैं, हम उसको ट्रेन करते हैं. वी मेक देम अवेयर, वी गिव देम मोर नॉलेज. बट जस्ट गिविंग मोर नॉलेज वुड नॉट रिजल्ट इन गुड इंटेंडेड बिहेवियर. पीपल व्हेन हमारे पास एक्सटर्नल ऑडिट में इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट होती है. हर साल एक फॉर्म साइन होता है. हर साल हम लोगों ने सबने फॉर्म साइन किया, जिन लोगों ने आई कैप से आर्टिकल्स किए और वो किए. इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट्स होती है, हम सब साइन करते हैं. Even if I assume that we read that form. So even if we assume that when you check a checkbox, that in that situation you're not giving the actual behavior, you're just saying giving a desired behavior. आप सिर्फ desired behavior शो कर रहे होते हैं. आप intended behavior, अगर आया तो ऐसा करूंगा, या फिर अगर किसी के भी सामने आए तो ऐसे होना चाहिए, ये होती है आपकी अंदर की लैंग्वेज. तो बाहर जब वो लैंग्वेज ट्रांसलेट होती है, वो सिचुएशन में ट्रांसलेट होती है. एंड द पर्सन डज नॉट अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ गैप बिटवीन द इंटेंडेड एंड एक्चुअल बिहेवियर. सो ऑफ कोर्स वी आर ट्राइंग टू मेक श्योर we are conducting sessions. We are conducting 2-day sessions as well. We have worked on developing an ethical blindness index as well, which will help organizations to assess the gap between their employees' intended and actual behavior. So of course, one of the short experiments that we did here, we're trying to make sure that people become aware, organizations become aware of their own unconsciousness. Employees become aware of that seriousness. आप लोगों ने Lord of the Rings देखी है? Lord of the Rings 1 या 2 थी, उसमें शायद एक सीन होता है, उसमें फ्रोडो जो कैरेक्टर होता है, वो सामने वाले जो एक वॉरियर होता है, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द नेम, बट मुझे अभी एग्जांपल बड़ी अच्छी आई है. वो ये कहता है, हाँ, बोरोबियन, यस. वो उसको कहता है कि वो जब उससे रिंग छीनता है, तो रिंग छीनने के बाद जब उसको दोबारा से कहता है कि नहीं, आई वोंट डू इट अगेन, तो कहता है, कैन यू सेव मी फ्रॉम योर सेल्फ. We are not sure that we are not even conscious that we are so vulnerable. हम समझते हैं कि शायद हम सिचुएशन में होते हैं. आम आदमी, एवरेज आदमी कैरेक्टर का मजबूत एवरेज आदमी नहीं होता. हमारे यहाँ अवाम है, खास आदमी होते हैं जो बड़ी सिचुएशंस में बड़े डिसीजंस लेते हैं और उन बड़े सिचुएशंस के अंदर वो बाहर आते हैं एज समवन एथिकल. लेकिन आम आदमी ऐसा नहीं होता. आम आदमी के गिर्द में आपको उस सिचुएशन को अवॉइड करना होता है कि वो कॉन्टेक्स्ट क्रिएट ना हो, प्रेशर्स बबल ना हो, वो पंप वो क्रिएट ही ना हो. आप अगर सेफ्टी की मिसाल, अगर कोई कंस्ट्रक्शन हो रही होती है और वहाँ पे अगर आप कॉर्डन ऑफ ना करें और कोई बंदा आके
जहाँ पे एंटर हो जाए और उसको नुकसान हो जाए, इंजरी हो जाए, तो आप नुकसान आप किसको कसूरवार ठहराएंगे? आप बोलेंगे, you won't say that the person should be vigilant. You would say that you should cordon off. Of course, the person not being vigilant is also responsible, but we have to make sure that we make both the things safe. The person should be made aware, should be made conscious, and the environment should be assessed on a regular basis. The design of the environment should be assessed on a regular basis. Do we have the reward systems of the companies? Enron had a very fierce reward system, जिसकी वजह से people were so fierce with each other that जिसकी वजह से उन्होंने वो सारे काम किए. You have different reward systems, you design, you rethink about reward systems, you have different motivations around you. If you have, for example, on a day of appraisal, on a day of, for example, bonus, you have 15 ODs that you're giving to the executives, and then you are at the very end of the employee ends, you are firing 50 people at the same day. What kind of an environment are we creating for organizations? So of course, what do you expect from people to do? From normal people to do? Would they abide by their own values? Or they would succumb to the pressure? That's what the concept is. So of course, this was a very short 1.5 seminar. Of course, I admit we have done injustice to these concepts because of course, they're so rich, so profound concepts that to cover them in 1.5 hours and to make you conscious of your unconsciousness or of everyone's unconsciousness, it's not very, it does not serve the entire purpose. But of course, it will be the first step to make you aware of what exactly is the situation. And organizations around the world are thinking very hard, not just, because of course it's very relevant for external audit, it's very relevant for internal audit, it's very relevant for all types of situations. Because frauds हर तरह की settings में होते हैं. So of course, I'll conclude this session from here. I'd like to, I think Adil will take over. Thank you. Thank you very much. Thank you very much, everyone. Thank you so much, Fayaz and Hasnan. I'm hopeful that this seminar gave all of us a basic understanding of what ethical blindness is. To conclude the evening, I would like to call upon stage Chairman SRC, Mr. Abdul Rabb, to present a few mementos to our speakers and give the vote of thanks. Thank you. Fayaz Kerawala. And Hasnan Badami. I would like to thank Fayaz and Hasnan for such a enlightening presentation, and I'm sure you must have found this useful as well. And this is the initial sessions that we have started, and in the initial discussions with Fayaz and Hasnan, and we are exploring further. So what I would like is, please fill in the feedback forms that we have given to you, and some suggestions and feedback that would help us in taking these type of discussions further. And in the end, I would like to formally conclude this session, and would like to invite you for the tea which is being served outside the auditorium. Thank you very much.